बाहेर जाऊन खेळ. Gay-Lussac's law of combining volumes. Now volume का combination. आता volume चं combination कसं आहे? Simple आहे. Any chemical reaction when gaseous reactant reacts each other to form gaseous product. To form gaseous product. When gaseous reactant reacts each other to form gaseous product, the combining ratio of gaseous reactant to product is always simple whole number ratio. Now, if you see, this is the one volume, this is the one volume, this is the two volume. आता वन व्हॉल्यूम म्हणजे काय असतं बेटा? एसटीपी ला जर आपण कोणत्याही वन मोलचा व्हॉल्यूम जर घेतला, एसटीपी ला कोणत्याही वन मोलचा व्हॉल्यूम जर घेतला तर तो किती असतो? दॅट इज 22.4. दॅट इज ऑल्सो 22.4 आणि हा किती असतो? 2 into 22.4 लीटर. यानी उसका जब रेशियो कितना आएगा? रेशियो becomes 1:1:2. What is the ratio? Ratio combining volumes, reactant to product, 1:1:2. That is a simple whole number ratio. कैसा आएगा? Simple whole number ratio. When gaseous reactant reacts each other to form gaseous product, the combining ratio of gaseous reactant to product is always simple whole number ratio. Volume का ratio simple है. Now, if you see, this is the one reaction, this is the another reaction. You can see H2 gas plus CH2 double bond CH2 gas, that is called as ethene gas. That gives CH3 and CH3. Now that is ethane gas. उसको बोलते हैं ethane gas. इथेन गैस बोलेंगे इसको. अब ये वॉल्यूम कितना होगा? वन वॉल्यूम. दैट इज ऑल्सो वन वॉल्यूम and that is also one volume. म्हणजे हे व्हॉल्यूमचे रेशो वेगळा असतं बरं का. म्हणजे एक ग्लास पाणी घेतलं आणि एक ग्लास पाणी टाकलं आणि त्याच्यात 2 ग्लास झालं म्हणजे 1:1:2 झालं. पण रिएक्टर मध्ये तसं नसते. हे रिएक्शन ही मोल वर डिपेंड असते, त्याच्या मॉलिक्यूल वर डिपेंड असते. मग इथं रेशो कसा? 1:1:2 व्हॉल्यूम झाले. जेवढे हे व्हॉल्यूम झाले तेवढा रेशो असतो आपला. म्हणजे वन व्हॉल्यूम हे वन व्हॉल्यूम हे वन व्हॉल्यूम. आता कधी कधी वेगळे रिएक्शन सुद्धा असते. हा रेशो हियर वी आर गोइंग टू राइट रेशो कितना आएगा? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट 1:1:1. 1:1:1. अब रिएक्शन नंबर 3, N2 gas plus 3H2 gas. 3H2 gas that gives 2NH3 gas. कितना आएगा? 2NH3 gas. ये कोएफिशिएंट है बेटा. these are the coefficient है. जितने कोएफिशिएंट है उसका कंबाइनिंग रेशियो होगा. Now this is the one volume, that is also 3 volume and that is the 2 volume. म्हणजे हे व्हॉल्यूम कसा भी असू शकतो. ते फक्त केमिकल रिएक्शन मध्ये, म्हणजे दॅट इज नॉट ऍडिशन ऑफ व्हॉल्यूम. ते ऍडिशन नसतं व्हॉल्यूमचं. ते फक्त त्या कॉम्बिनेशन वर डिपेंड असते. एक व्हॉल्यूम 2 व्हॉल्यूम असू शकते, नसू शकते, व नाही असू शकते. अलग लक्षात. मग आता याच्यामध्ये 1:3:2 तो रेशियो कितना आएगा? रेशियो दैट बिकम्स 1:3:2. रेशियो आएगा 1:3:2. बराबर. The ratio 1:3:2. That is called as Gay-Lussac's law of combining volumes. क्या बोलेंगे उसको? Gay-Lussac's law of combining volumes. त्याला म्हणायचं combining volumes. चला स्क्रीनशॉट घ्या बरं.
हा झाला का स्क्रीनशॉट सगळ्यांचा? हो सर. ओके ओके, कळालं, लक्षात आलं, खूप सोपं आहे. आता पुढचा लॉ कोणता आहे रे रोशन? काय नाव त्याचं? मला वाटतंय अवोगॅड्रोस लॉ आहे का बॉइल्स लॉ आहे? गॅस लॉ काय राहिला? गॅस लॉ. गॅस गॅस लॉ लॉ. डायरेक्ट ना. ओके, बॉइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, त्याच्यामध्ये अवोगॅड्रोस लॉ, हे सुद्धा गॅस लॉच आहे. हे गॅसेस व्हॉल्यूम साठीच आहे. Gaseous reactant react to form gaseous product. The combining ratio of gaseous combining ratio of volume of gaseous reactant to product is always simple whole number ratio. इसका रेशियो कैसा आएगा? सिंपल होल नंबर रेशियो. ठीक है, ओके. आता बघा याच्यामध्ये gas law or law of gases. In that, here we have to see now gases is the compressible, gases are the compressible, and therefore they shows the different behavior than that of the liquid and solid. Now point you have to keep it mind. यदि आपको point याद रखना है, ध्यान में रखना है, तो गैसेस के ऊपर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो आपको याद करने हैं. यानी गैसेस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम के ऊपर कौन सा फैक्टर है, उसके बाद उसका आएगा टेम्परेचर, उसके बाद आएगा प्रेशर, and also there is a number of moles. Now how these are the parameters? They are interdependent on each other. एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड है, एक दूसऱ्यावर कसे डिपेंड असते, डिपेंड कैसे होगे, या how they are interrelated with each other, whether their proportion is directly, whether their proportion is inversely proportional, and so on. उनका प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या कैसा है प्रोपोर्शन, इनवर्सली होगा, डायरेक्टली होगा, या देयर इज अ कांस्टेंट वैल्यू. ओके, इज इट राइट? नाउ इन दिस केस वी हैव टू सी गैस लॉ. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल गैस लॉ में हमें देखना है बॉयल्स लॉ. अगोदरचा कोणता लॉ बघितला? गाय लॉ. आता झाला बैल लॉ, है की नाही? पहिला गाय लॉ, आता बैल लॉ, यानी गे लॉ एंड बॉयल लॉ. The Boyle है, again this is one of the most important scientist of chemistry, modern chemistry, जिसका नाम है रॉबर्ट बॉयल. रॉबर्ट बॉयल. नाउ रॉबर्ट बॉयल का कहना यह है, बहुत ही सिंपल सी बात बोली उन्होंने, यदि हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, अब सपोज हमें क्या करना है, प्रेशर कुकर, सिंपल कौन सा भी ले लो, सिलेंडर गैस, अब गैस कंटेन और n मोल ऑफ सिलेंडर, गैस कंटेन में n मोल ऑफ गैस है सिलेंडर में, और ये गैस हमने रखा है कांस्टेंट टेम्परेचर पर. नाउ कंसीडर द गैस इज नथिंग बट आवर LPG gas, and on which wetless frictionless pistons are fitted, जिसमें वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन फीड किया गया, बराबर है, वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन. अब पिस्टन का काम क्या है? ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, दैट एक्ट्स एज अ लाइक अ एक्सपांशन एंड कंप्रेशन. नाउ अब करना क्या है कि गैसेस के ऊपर यदि हम पिस्टन रखेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको प्रेस करेंगे, हम क्या करेंगे, उसको प्रेस करेंगे. जब हम प्रेस करेंगे तो गैस का होगा कंप्रेशन, गैस का क्या होगा, कंप्रेशन. नाउ गैस अंडरगोज द कंप्रेशन. नाउ सिमिलरली
इफ यू राइज द प्रेशर, प्रेशर जब हम राइज करेंगे गैस का कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन यानी गैस का वॉल्यूम कम होगा, बिकॉज गैसेस आर द कंप्रेसिबल। ओके, अब जब हम क्या करेंगे, उसका प्रेशर कम करेंगे, सपोज दिस इज अ पिस्टन, जब हम उसका प्रेशर कम करेंगे तो गैस अंडरगोज द एक्सपांशन, अब गैस ऊपर आएगा, यानी गैस का ऊपर आना नीचे जाना, ऊपर आना नीचे जाना, that is the similar process takes place at the constant temperature. Now such case it is happen in a Boyle's law. तो Boyle's law क्या करता है, by keeping temperature is a constant, यदि हम temperature constant रखेंगे, जब हम temperature constant रखेंगे तो volume of given mass of a gas by keeping temperature, सर तुमचा माइक ऑफ झालाय. सर माइक ऑफ है, माइक ऑफ है. yes, is it now? Pratham, यस सर. okay. तो और क्या होगा, पीवी क्या आएगा, K is nothing but PV, nothing but constant, and therefore PV nothing but constant, and therefore directly यदि हम लेंगे P1 V1 is equal to P2 V2, P1 V1 is equal to P2 V2, बराबर है, P1 V1 is equal to P2 V2, अलग अलग लक्षात. This is the one gas and this is for the another gas, or this is initial and this is the final condition. ही इनिशियल असेल, ही फायनल असेल, आलं का लक्षात, कळालं का पोरं, ही पहिल्यांदा, म्हणजे आता एक क्वेश्चन कसा विचारतात, when a certain amount of gas, माहित नाही किती येतं, undergoes the compression ऐसा नीचे जाएगा, undergoes the compression if the pressure is P 1 atm, बराबर है, and volume is V 0.5 liter, then temperature, समजा त्याचं प्रेशर एवढं झालं, what is the final volume, final volume किती असेल, याचा क्वेश्चन विचारला जातो, याला म्हणायचं बॉयल्स लॉ. काय म्हणायचं, बॉयल्स लॉ, यानी के कांस्टेंट टेम्परेचर में वॉल्यूम of given mass of a gas at constant temperature, volume of given mass of a gas is inversely proportional to its pressure, inversely proportional to its pressure. Is it right? Clear है? तो ये है आपका लॉ, कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ, राइट. अब दूसरा जो लॉ है, दिस इज द नंबर 1, नंबर 2 जिसका नाम है चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ साइंटिस्ट के नाम है ये, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ. तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, अब यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, अब हम क्या करेंगे बेटा, प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, सर प्रेशर, हाँ प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे. तो बाय कीपिंग प्रेशर इज कांस्टेंट, देयरफॉर रिलेशन क्या आएगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. आता याचा रेशो कसा असेल, प्रेशर आणि व्हॉल्यूमचं रिलेशन कसं असेल,
इथं प्रेशर असेल आणि इथं व्हॉल्यूम असेल तर रिलेशन असं असेल इनवर्स, है की नाही? व्हॉल्यूम कसा असेल असं असेल. मग आता हे दिस इज P1 V1 PV इनवर्सली प्रोपोर्शनल सूत्र असतात. आता इथे काय आलं मग V अपॉन T इज इक्वल टू क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट. Therefore V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. तो कांस्टेंट चॉकलेट दूध दिया तो V कितना आएगा? V T constant. Okay, so that is the Charles law. मग काय करायचं? By keeping pressure is the constant, volume of a given mass of a gas is directly proportional to the temperature. That is the main relation. Is it right? डिसूजा है क्या? डिसूजा को समझ में आ रहा है? Yes, डिसूजा getting now. शहर वाले, कांक वाले, you are attending lecture or not? है क्या हो शहर वाले, ताक वाले? ओके, इज इट राइट? चलो, अब कौन सा लॉ है? अवोगाड्रोस लॉ ना? क्या दूसरा है? अमॉन्टन्स लॉ. परत गेलो-सॅक्स लॉ आहे एक अजून. आपण गेलो-सॅक्स लॉ पण आहे तिसरा एक वेगळ्या टर्म्स मध्ये. गेलो-सॅक्स लॉ. सर अब वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है. By keeping volume is constant, pressure of a given mass of a gas is directly proportional to temperature. By keeping volume is constant, the pressure of a given mass of a gas is directly proportional to temperature. Therefore, P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. If you write P by T is equal to आएगा constant आएगा. क्या आएगा? Constant. Constant. If you write the plot of this, यदि हम plot देखेंगे तो P versus T that is equal to constant. That is a straight line. That is also straight line with positive slope. ये कैसा कर्व है? कर्व. ओके, आलं लक्षात? कळालं? आता काय राहिलं? अवोगाड्रोस लॉ ना? हा, आदित्य अवोगाड्रोस लॉ आहे सर. हा, अवोगाड्रोस लॉ. ओके, अवोगाड्रोस लॉ मी त्याशी सांगितलं तुम्हाला मॉलिक्यूल मध्ये. तरी पण आता नंबर 4 8 STP. 8 STP. Volume of a given mass of a gas is directly proportional to the number of moles. Standard temperature pressure. इथं volume constant आहे. इथं काय आहे? इथं volume constant आहे. इथं temperature constant है, तो pressure constant है. And therefore यहाँ पर हम देखेंगे temperature pressure दोनों भी constant है. यानी STP की कंडीशन आपको पता है बेटा. टेम्परेचर कितना है? यहाँ पर जो टेम्परेचर है that is the 0 degree Celsius. You can call it 275 degree Celsius. Okay, 272. Okay.